Hello, my dear students. Now, this is the new topic under the cost accounting. The name is marginal costing. Basically, marginal costing is a technique. Marginal costing is a technique of costing. And the marginal costing means variable cost. Marginal costing means variable costing or variable cost. Now, according to variability, three type of expenses. Number first, variable expenses or variable cost. Second is the fixed cost or fixed expenses. Number third is the variable cost, semi-variable cost or step cost. According to variability, three type of expenses. Number first is the variable cost. Number second is the fixed cost, or number third is the semi-variable cost. Now question is, what is variable cost? If single unit increase or single unit decrease, then variable cost will increase or decrease accordingly. For example, material. Suppose the material cost is rupees 10 per unit. अगर आप एक यूनिट बनाएंगे तो 10 रुपये लगेगा, 1000 रुपये यूनिट बनाएंगे तो 1000 इंटू 10, 10,000 लगेगा. आप 1000 एक यूनिट बनाएंगे तो आपका 10,000 10 रुपीज़ बनेगा. और अगर आप 999 यूनिट बनाएंगे 999 तो एक पैसा लगेगा आपका 9,990. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. Single unit increase or single unit decrease, then variable cost will increase or decrease accordingly. Number second expenses is a fixed cost. Fixed cost. So fixed cost means which remain fixed up to a certain level of production. Which remain fixed up to a certain level of production. कई लोग आपको बताएंगे the definition of fixed cost is which remain fixed. This is not the correct or the exact definition. एक लिमिट के बाद बेटा फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाती है. सो दिस इज एग्जैक्टली रॉन्ग कि फिक्स कॉस्ट मीन्स विच रिमेन फिक्स्ड. फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड only up to the certain level of production. If you increase your production level over and above the certain level, so definitely हमारी फिक्स कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी उससे. So we cannot say कि fixed cost means which remain fixed. The definition is which remain fixed up to a certain level of production. Now third one is the semi-variable cost. Semi-variable cost means which includes some of the part is variable and some of the part is fixed. Semi-variable cost means in which some of the part is variable and some of the part is fixed. And the another name of semi-variable cost is step cost.
कभी फिक्स, कभी बढ़ेगी, कभी फिक्स और कभी बढ़ेगी. दिस इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. क्लियर? नाउ द एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल. is the electricity bill. बेटे एक तो आपका बिल आता है जिसमें होते हैं फिक्स चार्जेस अकॉर्डिंग टू किलोवाट ऑफ द मीटर. अगर आपके यहाँ 6 किलोवाट का मीटर है, आप बिजली यूज करेंगे या यूज नहीं करेंगे, तब भी 6 किलोवाट का मिनिमम चार्जेस तो आएगा. एंड दिस इज कॉल्ड फिक्स एक्सपेंसेस. और इसके अंदर सेकंड क्या आता है बेटा? रनिंग और वेरिएबल. जितना आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे उतना आपका बिल इसमें आएगा. तो एग्जांपल इज इलेक्ट्रिसिटी बिल. अंडर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, फर्स्ट इज फिक्स चार्ज और सेकंड इज वेरिएबल चार्ज. What is the example of fixed cost? Like rent. What is the example of variable cost? Like material, labor. So under the marginal costing, basically marginal costing is a technique. And technique will always be used for taking the decision. Whenever we want to take any type of decision, then different technique have the different assumption to take the decision. But marginal costing says, marginal costing means variable costing. And the assumption of this chapter is, whenever we take the decision under the marginal costing, then we consider only variable cost, never fixed cost. क्या बोलता है बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक. एंड यूज क्यों होती है? यूज फॉर टेकिंग डिसीजन. Used for taking decision. If you want to take the decision कि whether we should produce the product in India or purchase the product from outside India. So for that purpose we have to take the decision under different type of technique, but the marginal costing is the most important and what popular technique to take the decision. The assumption under this technique is that we will consider only variable cost, not fixed cost, because fixed cost is a sunk cost. हमारे डिसीजन पर फिक्स कॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा. हम डिसीजन किस पर लेंगे? हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग पर, वेरिएबल कॉस्टिंग पर. लाइक एक एग्जांपल देता हूं जी. आपने एक प्लॉट पसंद कर लिया एंड आपने एक आर्किटेक्ट को 25,000 रुपीज पे किया टू प्रिपेयर द मैप, ठीक है ना, ऑफ द पर्टिकुलर प्लॉट. एंड द आर्किटेक्ट ने आपसे 25,000 रुपीज चार्ज कर लिया. After payment of 25,000, after preparation of design, अब आप प्लान कर रहे हैं कि whether we should purchase the plot or not. आप बेटा परचेज प्लॉट करेंगे तब भी आपका 25,000 रुपीज चला गया. आप प्लॉट नहीं परचेज करेंगे तब भी आपका 25,000 रुपीज चला गया, बिकॉज दिस इज द फिक्स कॉस्ट. एंड फिक्स कॉस्ट मीन्स सम कॉस्ट, जो कॉस्ट आपकी चली गई.
So marginal costing says whenever we take the decision, so we consider only variable cost, never fixed costs. This is the basic concept of marginal costing. So there is some formulae and some of the part for the decision making. So first concept is marginal equation. And marginal equation means S minus V equal to F plus P. Here S stands for sales, V for variable cost, F stands for fixed cost, and P stands for profit. The complete marginal costing is based only on marginal equation, and marginal equation means S minus V equal to F plus P. This is the marginal equation. सारा का सारा मार्जिनल कॉस्टिंग इसी इक्वेशन पर टिका हुआ है. S स्टैंड फॉर सेल्स, V फॉर वेरिएबल कॉस्ट, F फॉर फिक्स कॉस्ट एंड P फॉर प्रॉफिट. नाउ वन ऑफ द कंसेप्ट इज कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन आप पढ़ेंगे बुक में, डेफिनेशन लिखा है सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट. क्या लिखिए डेफिनेशन? सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन. दैट मीन्स S minus V, or we can say F plus P, because S minus V equal to F plus P. So this is the formula of contribution, S minus V equal to F plus P. Now what is the exact meaning of contribution? But contribution means profit only under marginal costing. Contribution means profit only under marginal costing. The basically profit means, the universal meaning of profit means S minus C. C stand for cost, whether fixed cost or whether variable cost. If you want to calculate the profit, then we have already discussed in the last class at the time of preparation of cost sheet, sales minus cost equal to profit. But under the marginal costing, the profit means sales minus only variable cost, not fixed cost. तो बेटा इस केस में उनको कुछ नाम देना पड़ेगा, प्रॉफिट तो बोल नहीं सकते, बिकॉज यूनिवर्सली वी ऑल नो प्रॉफिट मीन सेल्स माइनस कॉस्ट. इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में एक नाम दिया गया इस टर्मोलॉजी को, इस टर्म को S माइनस V को. दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला. नेक्स्ट फॉर्मूला इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. हमें चेक करना है हमारा प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम मीन्स सेल्स. How much your profit in percentage of sale? So this is called profit volume ratio. So according to this, the formula होना चाहिए profit upon sales. formula क्या होना चाहिए? Profit upon sales. But under the marginal costing, beta profit means
S minus V upon S and multiply by 100. What is the meaning of profit? Profit means contribution. So formula is contribution upon sales and multiply by 100. Contribution upon sales multiply by 100. One more profit is also there to calculate the PV ratio. If 2-year figure, 2-year profit and 2-year sale, and 2-period profit and sales is given, half yearly, quarterly, monthly, in that case the formula of PV ratio is change in profit upon change in sales and multiply by 100. The difference of profit of both the year or both the period and divided by difference of sale of both the period or both the year and multiply by 100. पहले बेटा दोनों सालों के प्रॉफिट का दोनों सालों के सेल का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. If the single year figure is given, then to calculate the PV ratio, so formula is contribution upon sales multiply by 100, and contribution means S minus V upon S multiply by 100. Or if the 2-year 2-period figure is given, so formula is change in profit upon change in sales multiply by 100. This is the formula number 3. Now the fourth formula is break even point. Break even point. You all know or you all say the basic definition or the general definition is this is called no profit, no loss point. A point of sale where no profit or no loss. But this is not very good definition. The exact definition is a point where fixed cost has been recovered. Is called break even point. जिस पॉइंट पर हमने अपना फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लिया, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. अगर बेटा आपको निकालना पड़े ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, मतलब हाउ मेनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट. सो फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट and divided by contribution per unit. Or if you want to calculate the break even point in rupees, मतलब बेटा कितने रुपए की सेल करने पर हम ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर सकते हैं. सो फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट एंड डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. There is two formula. You can use the formula according to the ठीक है ना डिमांड. अब फॉर एग्जाम्पल बेटा द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹10 and the variable cost is 6 and your fixed cost is ₹4,000. बेटा कितने में आप सेल कर रहे हैं? ₹10 में. आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है?
6 रुपीज़, तो नाउ दिस इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये एस माइनस वी, रिमेनिंग इज कंट्रीब्यूशन। मतलब नाउ यू हैव ए सरप्लस ऑफ 4000 रुपीज पर यूनिट। अब बेटा आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4000 रुपीज। तो पहले आपको 10,000 यूनिट बेचना पड़ेगा टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। सॉरी 1000, सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया? 4000 रुपीज। दैट मीन्स इफ योर सेल इज up to only 1000 unit, exact 1000 unit, so this is your break even point. At the level of 1000 units you have recover your fixed costs. अगर बेटा आपने 1000 से कम बेचा तो आपको लॉस हो जाएगा, और 1000 से आपने ज़्यादा बेचा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। सो 3 formula clear? Now this is very small question. The selling price of a product ₹5, variable cost per ₹3 per unit, and the fixed expenses are 2000 per month. Find out the break even point. So there is 2 formula of break even point. Number first, break even point in units, or number second is break even point in rupees. What is the formula is in units? S minus V upon S, fixed cost divided by contribution. So first calculate the contribution, S minus V. How much S? 5. V is 3. कितना कंट्रीब्यूशन आ गया बेटा? 2 रुपए। हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है? 2000 डिवाइड बाय कितना? 2. सो नाउ द आंसर इज 1000 यूनिट्स। We need to sell 1000 यूनिट टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर अब बेटा आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, then how to calculate fixed cost and divide by PV ratio. First calculate PV ratio, profit volume ratio. What is the formula of profit volume ratio? S minus V upon S multiply by 100. यहाँ पर S कितना है बेटा? 5, V is 3 divided by 5, so आपका आंसर कितना आ गया? 40%. So put the data in the formula. 2000 divided by 40%. So now the answer is 5000 rupees. So profit volume ratio and PV ratio is break even point is done. Now question is, if the 2-year figure is given like this, from the following figure are available from the record of Rani Enterprises as at 31st of March 2006 and 2007. 2-year sales and 2-year profit is given in lakhs. Figure is given in lakhs. Clear? So now the first option is calculate the profit volume ratio. If the 2-year, 2-quarter, 2-half, 2-month data is given, then how to calculate PV ratio? Change in profit upon change in sales and multiply by 100. Difference of profit of both the year divided by difference of sales of both the year and multiply by 100. सो बेटा प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आ गया? चेक करो आप, प्रॉफिट कितना दिया है 2007 में? 50, और 6 में कितना दिया है? 30. सो 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय द सेल ऑफ 2007 200 एंड सेल ऑफ 2006 इज 150. ये कितना आ गया बेटा? 20 डिवाइड बाय 50
and multiply by 100. So now the answer is 40%. Answer कितना आ गया? 40%. How to calculate? If the 2-year figure, 2-quarter figure, 2-month figure, 2-year figure, 2-period figure is given, so formula is change in profit upon change in sales, multiply by 100. First calculate the difference of profit of both the year, divide by difference of sales of both the year and multiply by 100. Clear? Now बेटा साथ में बोल रहा है and the total fixed cost. Now how to calculate the fixed cost? So now the formula number 4. Sorry, formula number 5. How to calculate fixed costs? The formula of fixed cost is sales into PV ratio minus profit. And just formula of sixth number, formula of profit. Then formula is sales into PV ratio minus fixed cost. This is the formula of fixed cost, sales into PV ratio minus profit. Now the question says calculate the total fixed cost. Fixed cost means which remain fixed. But to calculate the fixed cost, you can use the data of either of the year, either 2006 or 2007. आपका fixed cost same आएगा. Clear? So now calculate the fixed cost. मैं बेटा आपको पहले 2006 का डेटा लेकर दिखा देता हूँ. आपको एग्जाम में किसी एक ही ईयर का डेटा लेना है. मैं करा रहा हूँ आपको जस्ट चेक करने के पर्पज से. फिक्स कॉस्ट, बट इज द फॉर्मूला सेल्स फॉर द ईयर 2006 is 150 multiply by PV ratio. We have already calculated PV ratio 40% and minus profit, and profit 30 is given in the question. So how much total fixed cost? The fixed cost is 30 lakh. हम बेटा डेटा ले लेते हैं 2007 का, just for check. Sales 200 lakh rupees for 2007. PV ratio 40% and profit is 50 lakh. So now the answer is 30 lakh. Clear? You can use the data either of the year to calculate the fixed costs. This is answer number first. Now the second answer, to find out the break-even level of sales. So there is two formula to calculate the break-even point in units or break-even point in rupees. But if the per unit data is not given in the question, then we cannot calculate the break-even point in term of units. और यहाँ दिया भी क्या है? Break-even level of sales. That means calculate the break-even point in rupees. What is the formula? Fixed cost and divide by PV ratio. बेटा कितना fixed cost है? 30 lakh. PV ratio कितना है? 40%. Now the answer is 75 lakh. Answer is 75 lakh. Clear? Now number third and number fourth. Number third is sales required to earn a profit of rupees 90 lakh. First, discuss the formula. Formula number 7. Formula number 7. This is sales at desired profit. किसका फॉर्मूला बेटा? Sales at desired profit.
अगर बेटा मैनेजमेंट ने आपको बोल दिया कि हमको इतना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, इतना प्रॉफिट डिजायर्ड है, तो टू अचीव द डिजायर्ड प्रॉफिट हाउ मेनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड and what amount of sales to earn a desired profit. So there is a two formula. If you want to calculate the desired profit in units, तो formula बेटा fixed cost plus desired profit and divided by contribution per unit. Or if you want to calculate the sales at desired profit in rupees, so formula is fixed cost plus desired profit and divided by PB ratio. There is two formula. Use the formula according to the demand of the question. If you want to calculate in term of rupee units, so divided by in term, no, this is wrong, in term of units, then divide by contribution per unit. If you want to calculate the sales at desired profit in term of rupees, then divide by PB ratio. Now apply the formula in this question. क्या बोल रहा है बेटा? Sales required to earn a profit of rupees 90 lakh. 90 लाख रुपीस की सेल करने के लिए हमको कितना सेल करना पड़ेगा? क्या निकालना बेटा? सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट. दिस इज आंसर नंबर 3. यह निकाल दीजिए. सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट. फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट एंड डिवाइड बाय पीबी रेशियो. बेटा हाउ मच फिक्स कॉस्ट? 30 lakh. Desired profit is 90 lakh and divided by PB ratio. PB ratio is 40%. So 120 divided by 40%. So now the answer is 300 lakh. $90 lakh का प्रॉफिट अर्न करने के लिए we need to sales worth rupees 300 lakh. Is this clear? Now the last item is profit or loss that would arise if the sales were rupees 280 lakh. क्या निकालना है? प्रॉफिट. प्रॉफिट और सेल्स that would arise if the sales were rupees 90 lakh, 280 lakh. So use the formula of profit. What is the formula of profit? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट. हाउ मच सेल्स? 280 lakh. पीवी रेशो इज 40% माइनस फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट कितना आ गया भाई हमारा? 30 lakh. नाउ द आंसर इज 280 इंटू 40% माइनस 30 lakh. सो नाउ द आंसर इज 82 लाख. इम्प्लाइड है बेटा. अगर आप 90 लाख का प्रॉफिट लेंगे तो 300 लाख की सेल करनी पड़ेगी. अगर आपका सेल कम हो जाएगी तो प्रॉफिट भी आपका कम हो जाएगा. Now the similar type of question, same as last question. Now what is the difference of this question? A Limited furnishes the following data related to the year 2008. In the last year, 2-year information is given. In the last question, sorry. In the year 2006 and 2007. But in this question, only 1-year information is given. First half information and second half information.
क्लियर? दिया है क्या बेटा? सेल्स 45 lakh, कॉस्ट 40 lakh, सेल्स 50,000 and sales 43,000. And how to calculate PV ratio? PV ratio कैसे निकलता है? अगर 2 year फिगर दिए, 2 period फिगर दिए, change in profit divided by change in sales and multiply by 100. Difference of profit of both the year divided by difference of sales in both the year multiply by 100. Clear? क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है? नो. कैन वी फाइंड आउट द प्रॉफिट? यस. हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट? सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट? सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट. तो देखो बेटा, यहां का प्रॉफिट कितना आ गया? 5,000. और यहां का प्रॉफिट कितना आ गया? 7,000. तो चेंज इन प्रॉफिट 7,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स 50,000 माइनस 45,000. ये कितना आ गया बेटा? 2,000 divided by 5,000 and multiply by 100. So now the PV ratio is 40%. This is the answer of A part. The second part is, B part is, calculate the fixed cost. And what is the formula of fixed cost? Fixed cost is sales into PV ratio and minus profit. So now बेटा हम डेटा लेते हैं फॉर द फर्स्ट हाफ. सेल्स फॉर द फर्स्ट हाफ 45,000. PV ratio is 40%. Profit is 5,000. Now the answer is 13,000. And for second half 50,000 multiply by 40% and minus 7,000. So now this is 13,000. But the total fixed cost for the year is 26,000. What is the difference of last question and this question? अगर बेटा आपको हाफ ईयरली डेटा दिया हो, then we need to calculate the fixed cost for complete year, for the whole year. Here 13,000 fixed cost for the first half and 13,000 fixed cost for the second half. And how much total fixed cost? So now the total fixed cost is 26,000. 13,000 plus 13,000. हमने बेटा यहां पर नहीं किया था ऐसा. हमने कितनी फिक्स कॉस्ट कंसीडर किया? ओनली 30 लाख. चेक करो हमारा फॉर्मूला बीईपी का 30 लाख अपॉन 40%. क्योंकि यहां पर 2 सालों का डेटा दिया है. कंप्लीट सेपरेटली ईयर डेटा इज गिवन, बट हियर हाफ ईयरली डेटा इज गिवन. So now the fixed cost is not 13,000 for the year. Fixed cost is 13,000 for first half and 13,000 for the second half, and the total fixed cost is rupees 26,000. Suppose बेटा सेम क्वेश्चन अगर होता और क्वार्टरली डेटा इज गिवन, फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर, एंड सपोज फर्स्ट क्वार्टर फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 13,000, देन हाउ मच टोटल फिक्स कॉस्ट? बेटा हाउ मेनी क्वार्टर इन अ ईयर? 4. सो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 4. कई बुक्स में क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत है, बट आपने ऐसे क्वेश्चन करना है इसको. थर्ड नंबर पे क्या निकालना बेटा हमने? ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स. द फॉर्मूला इज fixed cost divided by PV ratio, not contribution per unit, because contribution per unit data is not given. Beta, how much fixed cost? Fixed cost is 26,000, not 13,000, and divided by
40%. So now the answer is 65,000 rupees. And the fourth part, percentage of margin of safety to total sales. Now first discuss in formula number 8 what is margin of safety. What is margin of safety? We have solved just this question, and the answer of this question is, अगर हम 1000 यूनिट सेल करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? ब्रेक इवन पॉइंट पर. इफ द सेल्स इज लेस देन 1000 यूनिट, सो डेफिनेटली बेटा हमको टेंशन है, क्योंकि यहां पर लॉस है. और इफ द सेल्स ओवर एंड अबव द 1000 यूनिट, because 1000 is the BP, so I think there is no tension because we have covered your break even point. So what is margin of safety? So what is margin of safety? Sales over and above the break even point. Sales over and above the break even point is called margin of safety. बेटा वर्ड क्या लिखा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. बिजनेस में टेंशन है बेटा, टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट. वन यू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट, सो डेफिनेटली द प्रॉफिट विल अराइज, प्रॉफिट विल अकर. बट इफ यू फेल टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट, तो बेटा आपको लॉस होगा पक्का. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. सो फॉर्मूला क्या बन गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टोटल सेल्स minus sales at break even point. If you want to calculate margin of safety as percentage of sales, so what will be the formula? तो बेटा फॉर्मूला हमारा बनेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड डिवाइड बाय टोटल सेल्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100. One more question, more formula we can use to calculate the margin of safety. If the break even point or total sales is not given, then we can use this formula. The formula is profit upon PV ratio. ठीक है ना? हम तब लगाएंगे जब हमको डेटा ब्रेक इवन पॉइंट और टोटल सेल्स का नहीं दिया. तो यू कैन यूज ऑल्सो दिस फॉर्मूला टू हेल्प फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला इन द क्वेश्चन. Percentage of margin of safety to total sales. Clear? Point number D. So first calculate the total sales. Beta, how much total sales? 45,000 for the first half and 50,000 for the second half. Now the total sales is 95,000. Now calculate the margin of safety. But how to calculate margin of safety? Total sales minus sales at break even point. बेटा कितनी टोटल सेल निकाली हमने? 95,000. बीपी सेल कितना निकाला हमने भी? 65,000. कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया? 30,000. उसने पूछा क्या बेटा आपको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी as percentage. So now formula is margin of safety divided by total sales and multiply by 100. So now the answer is, this is 31.58%. So this is the difference of last question and this question. Next question. Break even point expressed in amount of sales in rupees, मतलब fixed cost upon PV ratio,
नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹60,000, हमने फॉर्मूला लगाना बेटा सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट, एंड हाउ मेनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑफ सेल्स। चलिए करते हैं क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस ₹20, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹10, एंड बेटा ये मिस्टेक है थोड़ा सा, दिस इज वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ₹3, फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट 540 एंड फिक्स सेलिंग कॉस्ट 252। कितना सेलिंग प्राइस दिया बेटा? ₹20 पर यूनिट। हाउ मच वेरिएबल कॉस्ट? 11 + 3 मतलब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ये कितना आ गया? ₹14 पर यूनिट। एंड हाउ मच टोटल फिक्स कॉस्ट? दिस इज 5,40,000 प्लस 252, सो बेटा फिक्स कॉस्ट हमारा आ गया 7,92,000। क्लियर? नाउ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। इसने क्या पूछा आपसे? ब्रेक इवन पॉइंट इनटू पीस। What is the formula? Formula is fixed cost and divided by PV ratio. How to calculate PV ratio? This is S minus V upon S multiplied by 100. कितना है बेटा? S 20, V कितना है? 14 divided by 20 and multiply by 100. So now the answer is 30%. Now beta you can calculate BP. How much fixed cost? Fixed cost is 7,92,000 divided by PV ratio 30%. Now this is the answer. Now the answer is 26,40,000. This is the answer of first part. Now the answer of second part. Number of units that must be sold to earn a profit of 60,000 per year. This is sales at desired profit. किस में निकालना बेटा आपको? In units. What is the formula? Formula is fixed cost plus desired profit and divided by contribution per unit. And how to calculate contribution per unit? S minus V. बेटा S कितना है? 20, V कितना है? 14, हमारा contribution कितना आ गया? ₹6. How much fixed cost? 792. कितना प्रॉफिट आपने अर्न करना है? डिजायर्ड प्रॉफिट 60,000 गिवन इन द क्वेश्चन एंड डिवाइड बाय 6. नाउ बेटा आंसर इज 1,42,000 यूनिट्स. अगर हमको 60,000 प्रॉफिट कमाना है सो वी नीड टू सेल 1,42,000 यूनिट्स. Now part third. How many units must be sold to earn a net income of 10% of sales? And the sales is not given in the question. क्या लिखा? How many units that must be sold to earn a net income of 10% of sales, and sales is not given in the question. But the selling price is given. So beta, how to calculate sales? Sales means number of units sold and multiply by selling price. Then we can find out the sale. But the number of units sold is not given in the question. This is the missing. But the selling price is given ₹20 per unit. So बेटा assume करना पड़ेगा. Assume
नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज एक्स। अगर बेटा ये कंप्लीट फिगर मिस होती, सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया होता और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी नहीं दिया होता, तो हम लोग एज्यूम करते सेल्स इज ₹100। अगर इक्वल टू का दूसरा साइड कंप्लीटली मिसिंग है तो अज्यूम करते हैं 100, और अगर उसका एक पार्ट मिसिंग है तो अज्यूम क्या करते हैं x। सो बेटा नाउ हाउ मच सेल्स, हमारी सेल्स कितनी हो गई 20x। x इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और सेलिंग प्राइस कितना दिया है 14। बेटा हाउ मच वेरिएबल कॉस्ट 14x, कितना वेरिएबल कॉस्ट दिया आपका 14 रुपीज पर यूनिट। सो 14 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय x, कितना बन गया आपका 14x। आपका बेटा प्रॉफिट कितना है 10% ऑफ सेल्स, सेल कितना है 20x, इसका कितना प्रॉफिट अर्न करना है आपने 10%, प्रॉफिट कितना हो गया 2x। So what is the formula of sales at desired profit? F plus P upon contribution per unit, S minus V। बेटा F कितना है 792, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 2x, S कितना है 20x, V कितना है 14x। तो बेटा x निकाल लेना, आंसर आ जाएगा 1,98,000 यूनिट्स। Clear? Next question. From the following data, calculate break-even point in units. Very easy. What should be the selling price per unit if break-even time point break down to 2,000 units? And how many units must be sold to earn a profit of ₹10,000? Data क्या क्या दिया बेटा, direct material will always be variable, direct labor will always be variable। याद रखना बेटा प्राइम कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होता है एंड वेरिएबल ओवरहेड्स आर 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 20 एंड फिक्स ओवरहेड आपका दिया है 50,000। पहले निकालते हैं बेटा वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल 4 रुपीज, लेबर 3 रुपीज, एंड हाउ मच वेरिएबल ओवरहेड, दिस इज 100% ऑफ लेबर। लेबर कितना बेटा 3 रुपये, कितना आ गया 3, टोटल कितना आ गया 10 रुपीज पर यूनिट। क्लियर? पहला आपसे किसने क्या पूछा, पहला ऑप्शन ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना बेटा 50,000, कंट्रीब्यूशन कितना है S माइनस V, S कितना है 20, V कितना है 10, आंसर कितना आ गया, दिस इज 5,000 यूनिट्स। हमको 5,000 यूनिट बेचना पड़ेगा टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ बेटा सेकंड पार्ट सेज what should be the selling price per unit if break even point brought down to 4,000 यूनिट। अगर बेटा हमको ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी लेके आना है, पहले लेके आना है, तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ानी होगी या फिर हमको वेरिएबल कॉस्ट अपनी कम करनी होगी। फिक्स कॉस्ट इज फिक्स, दिस इज नॉट वेरी इजी टू चेंज द फिक्स कॉस्ट, टू रिड्यूस द फिक्स कॉस्ट। क्लियर? बट इसने पूछा कि आपसे बट शुड बी द सेलिंग प्राइस, मतलब क्वेश्चन आस्क रिगार्डिंग द सेलिंग प्राइस नॉट वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? सो बेटा जस्ट पुट द डेटा अगेन इन द फॉर्मूला ऑफ बीपी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। और उसने आपसे फिक्स कॉस्ट कितना बोला 4,000, बट शुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट ब्रॉट डाउन टू 4,000 यूनिट्स। नाउ द फिक्स कॉस्ट इज 4,000, sorry BP is 4,000, how much fixed cost 50,000। हमें बेटा सेलिंग प्राइस निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10, सॉल्व करना, सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 22 रुपीज 50 पैसा। अगर अपना सेलिंग प्राइस
20 से बढ़ा के 22.5 कर दें, then we can brought down the break-even point at the level of 4,000 units. Third number point is very simple, you can easily solve, है ना. Sales desired unit sales required to earn a desired profit. Put the formula. Next question. RS Manufacturing Limited budgets production of 3 lakh unit at a variable cost of rupees 10 per unit. हमने कितना बेटा बनाना है, बेचना है 3 lakh units. And fixed costs are rupees 20,000 and selling price is fixed to yield 20% profit on cost. You are required to calculate PV ratio and break even point. How to calculate PV ratio? S minus V upon S multiplied by 100, or in this question selling price is not given but information is given, so you can use the information and calculate the selling price. Clear? Now beta, first calculate the selling price. Variable cost is given, variable cost 10 rupees is given. हम बेटा कितना बना रहे हैं, 3 lakh multiply by 10, then how much total variable cost, 3 lakh. How much fixed cost is given, 20 lakh. Now how much total cost, total cost is 50 lakh plus profit, then we can find out the sale. What is the formula? Cost plus profit equal to sales. क्या लिखा है, selling price is fixed to yield 20% profit on cost. बेटा इसका 20% आपने कर देना, कितना आ जाएगा, 10 lakh. Now how much total sales, total sales बेटा हमारा यहाँ पर आ गया 60 lakh. So we can easily find out the selling price, total sales, and divided by number of units. So now the selling price is 20 rupees per unit. Now beta you can easily calculate profit volume ratio and break even point. How to calculate PV ratio? PV ratio is S minus V upon S multiplied by 100. How much S? 20. Variable cost is 10 divided by 20 and multiply by 100. बेटा आंसर हमारा कितना आ गया, 50%. How much BP units? Fixed cost divided by contribution per unit. बेटा कितना fixed cost है, 20 lakh. ये कितना है, 10. हमारा आंसर कितना आ गया, 2 लाख. Very easy question, very easy. Now the next question. The sale of a product amounted to 200 units per month at rupees 10 per unit. तो बेटा हमारी टोटल सेल्स कितनी हो गई, 200 यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपीज पर यूनिट, तो हमारी सेल कितनी हो गई बेटा, 2000. एंड द फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 400 per month, variable cost 6 rupees per unit. There is a proposal to reduce prices by 10%. Which price? Selling price. Calculate the present PV ratio and future PV ratio, and applying the PV ratio, how many units to be sold in future to maintain the present profit. प्रेजेंट प्रॉफिट बेटा आपको मेंटेन करना है, फ्यूचर में आपको सेलिंग प्राइस घटानी है, तो पूछ रहा है आपको कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी, कितने यूनिट आपको बेचनी पड़ेगी. तो एक काम कर लेते हैं, वर्किंग नोट में पहले प्रेजेंट प्रॉफिट निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं, प्रेजेंट प्रॉफिट. हाउ टू कैलकुलेट सेल्स, माइनस बेटा वेरिएबल कॉस्ट, 200 यूनिट्स इंटू 6 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, कितना आ गया, 1200. So S minus V is contribution कितना आ गया, 800, and contribution minus fixed cost. How much fixed cost is given, 400. So बेटा प्रेजेंट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया,
हम बेटा प्रेजेंट में 400 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं। क्लियर? कहता कैलकुलेट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीवी रेशो। चलो बेटा ये निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालते हैं? प्रेजेंट पीवी रेशो। सो एस माइनस वी अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा प्रेजेंट में एस कितना है? 10, वी कितना है? 6, एस कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आंसर आ गया? 40%। अब क्या बोल रहा है आपसे? कैलकुलेट द फ्यूचर पीवी रेशो। The future PV ratio means after reduction the prices by 10%. Which price? Selling price. Because we cannot reduce the price of variable. Because this is not very easy to reduce the price of variable. If question is silent regarding which price is reduced, so we can only reduce the price of sales. So now beta first calculate the new selling price. 10 rupees माइनस 10%। सो न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका? 9, बिकॉज आपकी सेलिंग प्राइस 10 रुपीज कम हो गई। सो नाउ बेटा कैलकुलेट द न्यू पीवी रेशो। 9 माइनस 6 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 100। सो नाउ द आंसर इज 33.33%। कैलकुलेट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीवी रेशो। डन। एंड अप्लाइंग द पीवी रेशो। Which PV ratio? New PV ratio or new contribution. How many unit to be sold in future to maintain the present profit? निकालना है क्या बेटा आपको? Sales at desired profit. किस में निकालना है? यूनिट्स में। Fixed cost plus desired profit and divided by contribution per unit. Beta, how much fixed cost? 400 rupees is given in the question. How much desired profit? Desired profit बेटे वो हमको मेंटेन करना है जो प्रेजेंट प्रॉफिट था, और हमने प्रेजेंट प्रॉफिट अभी निकाला वर्किंग नोट में। और हमारा कंट्रीब्यूशन बेटा कितना है? 9 माइनस 6। क्लियर? सो बेटा 800 डिवाइड बाय 3। सो नाउ द आंसर इज 266 यूनिट्स हमको सेल करना पड़ेगा 400 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट। नाउ द सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। Two competitive companies, Hero Limited and Zero Limited, sell the same type of product in the same market. Their forecasted profit and loss account for the year ending 30 December 1999 are as follow. Information of Hero and Zero is given. Sales 5 lakh of both the company. Variable company of Hero Limited is 4 lakh and Zero Limited is 3 lakh. Fixed cost of the Hero Limited 50,000, for Zero Limited 1,50,000, and profit is same of both the company. Now you are required to state which company is likely to earn greater profit in condition of low demand or in condition of high demand. तो आपसे बेटा ये पूछ रहा है अगर डिमांड कम है तो कौन सी कंपनी अच्छी है और डिमांड ज़्यादा है तो कौन सी कंपनी अच्छी है। बेटा क्रक्स है एक। बेटा डिमांड अगर कम है तो मैं कंसीडर क्या करना है? ब्रेक इवन पॉइंट। जितना जल्दी हम ब्रेक इवन पॉइंट कवर कर लेंगे उतनी हमारी टेंशन कम हो जाएगी, बिकॉज डिमांड इज लेस। When the demand is less, when demand is low, so definitely we have to first think to achieve the break-even point. Or if the demand is high, so there is no tension to achieve the break-even point. Company definitely achieve the break-even point because demand is high, so we consider only PV ratio to take the decision. In this type of question,
आपने बेटा पीबी रेशो और ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के रख लेना है और फिर उसको एनालिसिस करना है। तो हम दोनों कंपनी का हीरो लिमिटेड एंड जीरो लिमिटेड का पहले क्या निकाल लेते हैं, पीबी रेशो एस माइनस बी अपॉन एस मल्टीप्लाई 100। इसकी सेल्स कितनी है बेटा 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 4 लाख, डिवाइड बाय 5 लाख, कितना परसेंट आ गया 20%। इसकी सेल 5 लाख, इसकी वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख, इंटू 100 भी है ना यहाँ पर, तो आंसर कितना आ गया 40%। अब क्या निकाल लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। इसका बेटा फिक्स कॉस्ट कितना है 50,000, ओनली 50। $250। इसका कितना है बेटा 150। पीवी रेशो कितना है 370, कितना ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, सॉरी बेटा। सो इन केस ऑफ लो डिमांड, Hero Limited is better because company achieve the break-even point earlier in comparison to Zero Limited. Because the break-even point is of Hero Limited is 2,50,000, while the break-even point of Zero Limited is rupees 3,75,000. So company achieve the early break-even point. That's why in case of low demand, Hero Limited is better, or in case of high demand. Zero Limited is better because of high PB ratio. The PB ratio of Hero Limited is 20%, while the PB ratio of Zero Limited is 40%. If the demand is high, that means there is no tension to achieve the break-even point. When the company earned the more profit in comparison to another company, then such company is better in condition of high demand. Clear? Next, the decision related to make or buy decision. हमने पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट खुद बनाना है या बाहर से लेके यूज करना है. मेक और बाय डिसीजन विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू ओनली पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट फॉर प्रोडक्ट. अगर हम किसी पार्ट्स की बात करेंगे प्रोडक्ट की, तभी ये डिसीजन यूजफुल है, काम आता है. प्रोडक्ट के लिए डिसीजन नहीं लिया जाता. क्वेश्चन इज द राइट बेल साइकिल लिमिटेड परचेजेस 20,000 bells per annum from outside supplier at ₹5 per each. राइट बेल साइकिल लिमिटेड बेटा साइकिल की बेल्स परचेज करती है 20,000 बेल्स ₹5 का. पहली बात तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय कंपनी परचेज ओनली 20,000 बेल्स. रीजन इज दैट कि कंपनी नीड or requirement of the company is only 20,000 bells. That's why company purchase only 20,000 bells. So beta buying cost is ₹5, purchase cost is ₹5. Now we compare the purchase cost with the manufacturing cost. तभी हम डिसीजन ले सकते हैं. आगे क्या लिखा बेटा, the management feels that
These should be manufactured and not purchased. हमको बनाना चाहिए, परचेज नहीं करना चाहिए. A machine costing of rupees 50,000 will be required to manufacture the item within the factory. So definitely beta, whenever you produce the bells, so you need one of the machinery. तो कितने की मशीनरी हमको चाहिए? 50,000 रुपीज़ की. The machine has an annual capacity of 30,000 units and the life of 5 years. The following additional information is available. मटेरियल लगता है 2 रुपीज़ का, लेबर लगता है बेटा 1 रुपीज़ का, एंड वेरिएबल ओवरहेड कितना लगता है? 100% ऑफ लेबर. इसका मतलब कितने का? 1 रुपीज़ का. You are required to advise whether the company should continue to purchase the bell from outside supplier or should make them in the factory. कंपनी को परचेज करना चाहिए या कंपनी को बेटा खुद बनाना चाहिए. सो बेटा हमारी बाइंग कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज़. हमारी बाइंग कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज़ पर बेल्स. Now beta we need to calculate manufacturing cost. बेटा मटेरियल कितने का लगा? 2 रुपीज़ का. लेबर 1 रुपीज़ का. वेरिएबल ओवरहेड कितने का लगा? 1 रुपीज़ का. 100% ऑफ लेबर. टोटल कितना आ गया? 4 रुपीज़. नाउ वी नीड टू ऐड डेप्रिसिएशन कॉस्ट per unit or per bells. Calculate here the depreciation cost. How much cost of the machine? 50,000 rupees. And the annual capacity of the machine is 30,000 units and the life of 5 years. हमने बेटा कॉस्ट को डिवाइड कर दिया किससे? लाइफ से. तो बेटा हमारा ये 10,000 किसका खर्चा आ गया? दिस इज द पर ईयर कॉस्ट. हमें निकालना क्या? पर यूनिट. देन हाउ मच डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट? 10,000 डिवाइडेड बाय, बेटा मशीन की कैपेसिटी कितनी है? 30,000 यूनिट्स. इसका मतलब हमको 30,000 से डिवाइड करना चाहिए. बट बेटा कंपनी मार्केट से परचेज कितना कर रही है? ओनली 20,000 यूनिट्स. इसका मतलब है कंपनी रिक्वायर ओनली 20,000 यूनिट्स. सो वी हैव टू चार्ज टोटल डेप्रिसिएशन ओनली ऑन 20,000 यूनिट्स, नॉट 30,000 यूनिट, बिकॉज हम लोग बनाएंगे कितना? ओनली 20,000 यूनिट्स. दैट मीन्स द डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज 50 पैसा पर यूनिट. हमने यहाँ पर बेटा 50 पैसे और जोड़ दिया. देन हाउ मच टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? दिस इज 4.5 रुपीज per bells. Now the buying cost, purchase cost is ₹5 and manufacturing cost is ₹4.5. तो बेटा क्या करना चाहिए हमको? So we should manufacture the product. आगे क्या बोलता है? The company should accept an offer to supply 5,000 bells to the market. ये वाला पॉइंट क्लियर है?
The company should accept an offer to supply 5,000 bells to the market at a selling price of rupees 4.5 per unit. बेटा कंपनी के पास एक ऑफर आया कि हमको 5,000 बेल्स चाहिए, बट वो ऑफर कितने में है? केवल 4.5 रुपीज में है। तो कहता बेटा वेदर वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। बेटा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वी हैव टू चेक whether we have a sufficient capacity of the machine to produce the 5,000 bells. Yes, because we have already purchased a machinery for the capacity of 30,000 bells, 30,000 units, and currently we are producing only 20,000 bells. That means we have a sufficient capacity to produce more 10,000 bells. आपसे ऑफर कितने का आया? केवल 5,000 बेल्स का, बट वो कितने में आया? 4.5 रुपए में। तो बेटा क्वेश्चन है, क्या ये ऑफर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए? आंसर ऑफ पार्ट बी। नाउ कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मटेरियल 2 rupees, labor 1 rupees, variable overhead 1 rupees, total is 5, and depreciation cost is 0. So total manufacturing cost is rupees 5. Why depreciation cost is 0 here? Because is that we have charged total amount of depreciation on primary production of 20,000 bells. हमने डेप्रिसिएशन सारा का सारा चार्ज कर दिया। अब जो रिमेनिंग 10,000 हमारे पास कैपेसिटी पड़ी हुई है, we never charge the depreciation on remaining 10,000 units because we have already charged total amount of depreciation on primary 20,000 units. That's why here depreciation cost is 0. How much total manufacturing cost? 4. How much offering price? 4.5. So answer is we should accept the offer. We should accept the offer because manufacturing cost is less than the offer price. Clear? So beta, I have solved I think 7 or 8 questions in this session. Notes I have already given in your class on your WhatsApp group, and the notes is already attached with the link. So please go through all the question. Okay. Thank you so much all of you. All the best.